Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss ribosomes. So let's move to the whiteboard. So ribosomes first of all, its discovery, who discovered? Dear students, ribosomes were discovered by BAORD in 1955. That is an MCQ. BAORD भी और दूसरे नंबर पर the year in which he discovered. Now, what is meant by ribosomes? So ribosome it is derived from two words, ribo and some or soma. Clear? Ribo means related to RNA, that is ribonucleic acid. Clear? And somes means referring to body or structure. Clear? So these are the bodies or structures which are related to the ribonucleic acids. Clear? As far as membranes are concerned, so they are the only organelles which are not bounded by any membrane. Clear? The only organelle which is not bounded by any membrane means they are membraneless . So that's the reason, so that's why they are also present in prokaryotes. Yeah. So as they are not bounded by any membrane, so that is the reason they are also present in the prokaryotes, means the bacteria. Because the major difference between eukaryotes and prokaryotes, that is the presence of internal cell membranes. Prokaryotes में internal cell membranes नहीं होती, इस वजह से उनके पास जो prominent nucleus नहीं होता, genetic material तो उनके पास भी है, chromatin material उनके पास भी है, लेकिन membranes का issue है. तो सिर्फ ये एक वाहिद ऐसा organelle है, ribosome, that is not bounded by any membrane. So that is the reason it is also present in the only organelle which is present in the prokaryotic cells, that is the ribosome. Clear? Now, dear students, there is another term which is related to ribosomes, that is
ribonucleoprotein particles. Ribonucleoprotein particles. So this is the terminology which is used for eukaryotic cells. The ribosomes are made up of equal amount of RNA and proteins. Means जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनमें ऑलमोस्ट 50% RNA मौजूद है और 50% प्रोटीन्स मौजूद हैं. So that's why they are called ribonucleo, from ribonucleic acid, ribonucleoprotein particles. Clear? So that was which was related to its intro. Now we can define them as the tiny granular membraneless structures present in the cell. Clear? So these are the ribosomes. Now, dear friends, their occurrence or their forms so as far as their forms are concerned, they occur in the cell in two forms, either attached or freely floating. In attached form, they are attached with rough endoplasmic reticulum. Clear? So that is why the endoplasmic reticulum was called as rough, because of the presence of these ribosomes, or freely floating in the cytoplasm. So these are the two major forms. Okay? Two major forms. In addition to these two major forms, the ribosomes, they are also present within the organelles. Within organelles like it is present in mitochondrial matrix, as well as they are also present in chloroplast. इंशाल्लाह जब इन ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे तो उनमें इनका जिक्र आएगा कि इनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, because have their own DNA, so there are also present some ribosomes for the purpose of protein synthesis. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के अलावा और कहाँ पर राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं. सो दैट इज एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में. और तीसरा डियर स्टूडेंट्स
they are also found within the nucleus और nucleus में कहाँ पर? In the nucleolus. Clear? Now their synthesis and assemblage ribosomes are assembled in nucleolus, that is the dark stained body within nucleus. न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेंड बॉडी होती है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहां पर इनकी असेंबलेज होगी. क्लियर? एंड आफ्टर assemblage, they are transported to the cytoplasm through nuclear pores. क्लियर? तो न्यूक्लियर पोर्स में जब न्यूक्लियस के अंदर इनकी सिंथेसिस हो जाती है, इनकी असेंबलेज हो जाती है, उसके बाद ये वहाँ से न्यूक्लियर पोर्स में से होते हुए दे रीच द साइटोप्लाज्म, दे ट्रांसपोर्टेड देम. नाउ द कंपोजिशन So ribosomes, they consist of two parts. Or two subunits. Number one is the large subunit, and number two is small subunit. Clear? And both these units are different in the eukaryotes as well as in the prokaryotes. In eukaryotes, the large subunit is 60S in eukaryotes, and 50S in prokaryotes. Clear? While the small subunit, it is 40S in eukaryotes and 30S in prokaryotes. Okay. So if we look at them, so this is the larger subunit. And this is a smaller subunit. The large subunit, it is 60S, while small subunit, it is 40S in eukaryotes. Clear? And both these subunits
they get joined with each other with the help of an ion, that is the magnesium ion. That is magnesium ion that serves to connect both these subunits whenever there is a need of protein synthesis. Clear? स्टूडेंट्स एक अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि अगर ये 60s और प्लस 40s it should be 100s, rather it is not 100, it is equal to 80s. So what is the reason behind this? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये S क्या है. The S stands, it is written as S, or sometimes also it is written as SV. So that is basically Swedberg unit. Which is used in ultracentrifugation. That tells about the sedimentation of the particles according to their molecular weights, according to their viscosity, according to their density, etc. etc. तो डियर स्टूडेंट्स 40 प्लस 60 यहाँ पर हम अरिथमेटिकली या मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, मीन्स कि 100s नहीं बनेगा. एक्चुअली ये स्वेडबर्ग यूनिट, दैट इज द यूनिट ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. सो सेंट्रीफ्यूग आपने कभी लैब्स में देखा हो या किसी मूवीज़ में या ड्रामास में. लैब्स के अंदर एक मशीन होती है, उसके अंदर स्पिन किया जाता है मटेरियल्स को. हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन, उसमें इसका जिक्र आया था सेंट्रीफ्यूगेशन का. तो इसमें जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर आप जो भी मटेरियल जिसको आप होमोजेनाइज करके और उसको फ्रैक्शनेट करना चाह रहे हैं तो उसको इसके इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालते हैं. इस तरह से टेस्ट ट्यूब है, और जिस तरह से आपके स्केल के ऊपर कैलिब्रेशन होती है ना, 1, 2, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसी तरह से यहाँ पर भी देयर इज कैलिब्रेशन. क्लियर? यहाँ पर होती है हाई डेंसिटी, over here is medium and over here is low density. Clear? तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. सो जितना ज़्यादा किसी का मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी हाई डेंसिटी होगी. तो जब इन चीज़ों को स्पन किया जाता है, उनको रोटेट किया जाता है इन द सेंट्रीफ्यूग मशीन, तो उनके जब वो पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर ये सेटल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटीज़. तो इसमें वो डेंसिटी के अंदर वो मैंने बताया था आपको कि इसमें वो मीडियम भी यूज़ किया जाता है आमतौर पर सीजियम क्लोराइड या इस तरह से, तो वो एक डेंसिटी ग्रेडियंट बना देता है. तो जिस चीज़ की उस डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ वो डेंसिटी मैच करेगी वहीं पर वो उसकी लेयरिंग बन जाएगी. ओके. तो ये स्वेडबर्ग यूनिट जब इन सब यूनिट्स को अलहदा से सेपरेटली जब स्पन किया जाए तो लार्ज सब यूनिट यहाँ पर 60 पे जो है वो यहाँ पर लेयर बनाएगा, और जबकि स्मॉल जो है वो 40 के ऊपर. ठीक है. लेकिन जब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में होंगे देन दे फॉर्म एट 80. तो ये इनका प्लस माइनस वाला चक्कर नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर इसका सेडिमेंटेशन रेट देख रहे हैं कि कहाँ पर इनकी लेयर बनती है. अलग-अलग होंगे तो लार्ज सब यूनिट 60s पे उसकी लेयर बनेगी, स्मॉल की 40 पे बनेगी, लेकिन जब ये कंबाइंड होंगे तो तब इनकी जो लेयर फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगी? एट द लेवल ऑफ 80. ओके. इसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर भी इसी तरह से है. 50 + 30 इट शुड बी 80, लेकिन उनके अंदर 80 नहीं होते बल्कि दे आर 70s. अब यहाँ पर इनका मैं वो डिफरेंस भी लिख देता हूँ. यूकैरियोटिक ribosomes, they are slightly larger. They are 80s, while prokaryotic ribosomes, they are 70s. Clear?
अब आते हैं स्टूडेंट्स आगे, एक और टर्मिनोलॉजी है, ये एमसीक्यूज याद रखना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम आयन, दैट फैसिलिटेट्स देयर बाइंडिंग। इसी तरह से स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात चूँकि यहाँ पर ये राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर हमने बात की कि इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोम इट इज़ प्रेजेंट आरएनए, सो द आरएनए present in ribosomes is called ribosomal RNA. Clear? Or we can also write small r RNA. Chapter number 2 RNA के टॉपिक में उनमें टाइप्स मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट अबंडेंट जो है वो यही टाइप है आरएनए की सेल के अंदर, अबाउट अप टू इट मेक्स अप टू 80%, और राइबोसोम्स में 40 to 50% जो है ये प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है। क्लियर? और समटाइम्स अब इसका जो मेजर फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का, यू नो वेरी वेल, इट्स फंक्शन इज द फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, दिस इज द मैसेंजर आरएनए, इट्स 5 प्राइम एंड एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, और इसके ऊपर वो न्यूक्लियोटाइड का कोड मौजूद है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स याद है, बहुत अहम बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए ये इट गेट्स अटैच्ड टू द स्मॉल सब यूनिट, दिस इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्लियर? ये इसके साथ आकर अटैच होगा, और उसके बाद जब ये असेंबली होगी, इसे आमतौर पर हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसके बाद फिर आकर अटैच होता है एट द सेकेंडरी पॉइंट देयर इज द लार्ज वन। ठीक है, लार्ज सब यूनिट। तो पहले एट फर्स्ट ये याद रखना है, एट फर्स्ट स्मॉल सब यूनिट इसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ, जो कि कोड लेकर आया है, मैसेज लेकर आया है, ट्रांसक्रिप्ट लेके आया है फ्रॉम द डीएनए। क्लियर? और समटाइम्स डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि कोई प्रोटीन बहुत बड़ी है तो उसका मैसेंजर आरएनए भी बहुत बड़ा होगा, तो उसको उससे प्रोटीन बनवाने के लिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स दे गेट अटैच्ड। इस तरह से to synthesize the protein, when group of ribosomes they get attached to the same stretch of messenger RNA, यहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, that is the polypeptide chain, और ये after that after its formation they disassemble. Like this. So this stretch of RNA, messenger RNA, that is carrying a group of ribosomes that is called as polysome. That is called as polysome. ये short question में भी आता है. When a group of ribosomes attach to the same stretch of messenger RNA, that is called termed as the polysome. ये short question भी है. इसी तरह से स्टूडेंट्स, चूंकि इनकी असेंबलेज कहाँ पर हो रही है, न्यूक्लियोलस के अंदर, so the nucleolus is called factory of ribosomes, while the ribosomes इनका क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, so they are called as the factory of protein synthesis. Clear? So hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे गोल्ची अपैरेटस को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।